Logical morning, everyone. My name is Palak Rajani. Welcome to yet another session on how to attempt English section for CLAT. In today's session, we are going to take up a very important thing that has been asked by so many of you, that is speed reading. रीड तो कर लेते हैं, या तो क्वेश्चन नहीं समझ में आता या स्पीड इतनी स्लो होती है कि क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं. सो हाउ टू बिल्ड अप दैट, how to correlate everything, how to do everything together so like perfectly कि हमारा time भी नहीं waste हो और हमारे questions, number of questions that we attempt वो भी अच्छे हों. See, mostly what happens, you attempt a few questions, you leave a few of them. जो attempt करते हैं वो correct होते हैं, correct नहीं होते हैं. सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करें कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एटलीस्ट थोड़े इंक्रीज हो जाएं, प्लस हाउ टू रीड इन एन इफेक्टिव मैनर कि जल्दी जल्दी भी पढ़ लें एंड इन्फरेंस भी क्लियरली निकाल लें. So in today's session, we are going to we'll try to cover a few tips and few pointers that are going to help you in reading with a fine speed and also at the same time understanding the text, because what's most important in RC is not skipping or not skimming between the lines but reading everything so as you are clear with the inference, you can instantly understand what this passage is trying to convey, what is the message of the author, and how do we interpret it through the point of view of the author itself. So let's begin. Speed and steady wins the race. Yes, my friends, slow and steady वाला सीन अगर आरसी में रखेंगे तो I don't think आरसी इतना अच्छा जाने वाला है. So please remember speed and steady. Speed तो रखना ही है, but steady keep your answers and understanding to the point as well. All right. So let's begin and move to our first टॉपिक ऑफ डिस्कशन. स्पीड रीडिंग में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है गाइस? दैट इज अंडरस्टैंडिंग द क्लैट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शंस पैटर्न. यू कैन टेक हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्लैट पेपर्स एज वेल. थोड़ा अगर पैटर्न की जानकारी रहती है, सी अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग इज नॉट गोइंग टू हर्ट यू. व्हाट आई फील इज इफेक्टिव लर्निंग हमेशा रेगुलर लर्निंग पे भारी पड़ती है. रेगुलर लर्निंग इज कीप ऑन सॉल्विंग आरसीज, अपनी स्पीड रेगुलेट करो, अपना टाइम मैनेज करो, ठीक है, दैट इज फाइन, दैट इज गुड, बट इफेक्टिव लर्निंग को इंट्रोड्यूस करेंगे so you are going to get better results. Effective learning calls for strategy. Strategize करना is very essential. Our first step would be कि questions कैसे आते हैं. अगर उसकी knowledge रहती है तो हमारा mind already prepared रहता है that we are going to attempt such type of questions. My paper is going to present some sort of questions that I should be prepared for. So when you go with this mentality, that really helps. Effective learning is what is called for at this time. Okay, questions would be based on viewpoints, arguments and main points. जो भी क्वेश्चन आते हैं, ऑथर क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कौन सा टॉपिक उठाया गया है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट इज यू हैव टू ड्रॉ इन्फरेंसेस, यू हैव टू ड्रॉ कंक्लूजन्स. आप जब पैसेज पढ़ते हो आपका एम ये होना चाहिए कि मुझे इसका इन्फरेंस समझ में आना चाहिए. आई मस्ट बी एबल टू कंक्लूड व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू प्रेजेंट बेस्ड ऑन व्यू पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड द मेन पॉइंट्स मेंशन्ड इन द पैसेज. जो भी व्यू पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उनको कंपेयर करके एक कॉमन इन्फरेंस पे निकलना इज व्हाट इज कॉल्ड इफेक्टिव लर्निंग. कॉम्प्रिहेंडिंग द मीनिंग ऑफ फ्रेजेस एंड वर्ड्स मेंशन. जब ये वाली बात आ जाती है तो आपका वोकैब लेवल शुड बी ऑन लाइक अप टू द मार्क. फ्रेजेस को समझने की एक यू शुड हैव अ नैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फ्रेजेस. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर व्हेन यू कीप इन माइंड, व्हेन यू हैव एन आइडिया कि मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, मैं इन आई विल बी फेसिंग सच क्वेश्चंस, आई विल बी फेसिंग सच पैसेजेस, then trust me, this really helps, having a mentality of what you are going into.
Moving on to improve reading speed. See, this is something you cannot do overnight, and this is something you cannot do in like a few hours. This is something you cannot do like right now. Okay, so reason being, this is something that comes through time. Impossible चीज नहीं है. Let me tell you, nothing is impossible. और ये तो इतनी बेसिक चीज है. अगर patiently हम ये follow करते हैं, then I'm sure by the time you're giving your CLAT exam, you will have a good understanding of so many things. Talking about the speed, gradually increase करने के बारे में सोचेंगे. We will go a bit gradually. ग्रेजुअली कैसे आता है? सी, अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, अगर मैं आपको बोलूं यू विल हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स, इफ आई से यू विल हैव टू रीड जर्नल्स, देन yes, you are getting me right, because this is the only way. I'm not asking you to cram things, but I'm asking you to make reading as a habit, because this is something that is going to help you in not just one way, that is reading, but many ways. आपका एक फॉर्मेट हो जाएगा दैट यू बीन रीडिंग फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स नाउ. तो जब आपको कुछ रीड करने को दिया जाएगा तो आपका माइंड लेजी नहीं होगा. यू विल बी एबल टू फोकस. दिस इज समथिंग आई हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 4 months नाउ. तो ये मेरे लिए इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू गो विद दिस अप्रोच, this instantly helps you. Strategies, what you must keep in mind is guided learning and reading big texts. You can start with small passages, but lengthy passages are part of CLAT. ये तो आप देख ही चुके होंगे if you go through previous years question papers as well. See, understanding and speed should go hand in hand. ऐसा नहीं होना चाहिए कि if you are reading it quickly, then understanding is lost. यही तो खेल है. This is what they are testing you on. So when you know what are you being tested on, I think it should be easy to approach, right? So first and foremost thing is guided learning. That is, make reading a habit for you. You can start reading books of subject, like from 12th or after class 12th. You can start with subjective books also, then you can go to political science, you can go to current affairs, then of course you can pick up newspapers. You can read, if you are like tired of reading the subject, you can pick a good novel to read. All in all, make reading a part of your life. It should be as regular to you as waking up and going to school or going anywhere that you do something in a routine. It should be as normal. It shouldn't be like a burden to you. And trust me, when you give yourself time, start with one at a time, like give a few pages per day. Then try to pick up a book that you like. So that what I'm trying to say is कि reading को एक habit बना लो. Then I'm sure when you are sitting in a room with the paper in your hand, you will not feel like a pressure in your mind कि मुझे अब ये करना है. This will be something like a habit. Okay, this is something I've been doing for the past 4 months. क्या ही passage होगा? I can easily attempt it, isn't it? So we have to normalize it to that level. Come on, let's move. Keep a track of how long it takes you to complete each RC. Do not read words again. हमें उस लेवल तक पहुंचना है गाइस कि हम वर्ड्स को बार बार नहीं पढ़ रहे हैं. We have a habit of doing things like keep a track of how long. Okay, keep a track of how. We do this when we read in mind. Right. So what you don't have to do is words को बार बार पढ़ने से बहुत टाइम वेस्ट होता है गाइस. So approach वैसी ही रखनी है. We are reading in our minds. So approach should be like that only. Do not read words again. While practicing, set a timer, stopwatch लगा लो, timer रख लो, very important, because monitoring yourself is going to give you results, and this is what your approach should be at all times. Experiment with different type of passages, long, short, descriptive, informative. Don't stick to something that you only like. कि मुझे तो ये fiction text ही पसंद है, मैं तो हैरी पॉटर ही पढ़ लूंगा. No, is experiment. Experiment is going to give you results. See, one important thing that I'd like to highlight here is experimenting with anything is going to give you result. While we are attempting English section, अगर हम अलग अलग passages पढ़ते हैं,
Like if we take a fiction text ले लिया, then we take something like editorials, then we go to subjective history ले ली. So इसमें क्या होता है, we are exercising our mind. This is mind exercise. आप जो फीड करोगे अपने माइंड में, इट इज गोइंग टू रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली. सो इफ यू आर फीडिंग दीज थिंग्स प्रायर, बिफोर एग्जामिनेशन, it is going to give you good results at the day of exam because your mind is now prepared. हम प्रिपेयर हो चुके हैं कि हमें किसी भी टाइप का पैसेज आ जाएगा, हमारा माइंड वो फॉर्मेट कर लेगा. ओके, दिस पैसेज इज एडिटोरियल है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग सोचना है. फिक्शन है तो मुझे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव पे चले जाना है. सब्जेक्टिव है तो मुझे उसे अंडरस्टैंड करना है, रीजनिंग समझनी है. सो दिस इज माइंड एक्सरसाइज माय फ्रेंड्स. दिस इज समथिंग यू कैन डू. दिस इज समथिंग योर पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, और ये टोटली हमारे हैंड्स में है. डोंट थिंक इट इज गोइंग टू कम लाइक आउट ऑफ नोवेयर. नो, दिस इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स. Practicing is completely in your hands. It is just that some of us get lazy and some of us decide to get up every day, isn't it? Okay, so this was like just a pointer that to let you know कि how to begin, where to begin from, शुरू कैसे करें. बहुत सारे like students आते हैं, they tell me कि मैम शुरू कैसे करना है, where do we start? I'm like, start right now, pick up anything, just start reading, isn't it? Internet is full of so many articles, e-journals हैं, कुछ भी उठा के just पढ़ना start करो. I'm like, I know it's boring, it might get monotonous, so this is why we say experiment. This is something you cannot like move your head from. वो तो कर नहीं सकते. So it's better to just give in and start like right now. All right. Okay, so after a few tips to improve your reading speed, a some suggestions on how to attempt lengthy passages. Let's not underestimate CLAT now. You are going to get passages that are lengthy. See, two things can happen. You can get a passage that is really lengthy and questions that are really direct. You are in luck. But second thing that can happen is passage भी lengthy है and questions भी infer करने में बहुत time लग रहा है. So when such situations like come up, you should be ready. You should be like a warrior. You should be like a soldier, isn't it? जो भी आ गया बस मैंने तो विकेट उड़ा देने. सो दैट थिंकिंग, दैट मोटिवेशन, दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच योर पेपर. सो कमिंग टू लेंदी पैसेजेस, फाइंड द सेंट्रल आइडिया. फर्स्ट 5 लाइन्स ऑफ द पैसेज, आपने फर्स्ट 5 लाइन्स पढ़ी, आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि व्हाट एम आई गोइंग टू रीड अहेड. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड पे अगर पैसेज है, कोविड पे मल्टीपल पैसेजेस आ चुके हैं. I am giving you one example, very simple example. First 5 lines of any passage, how they are going to give out the central idea. For example, the passage begins and talks about like how the education system has suffered during the times of, pandemic. तो हम समझ जाते हैं कि पूरा पैसेज इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ द एजुकेशन सफर्ड, हाउ द चिल्ड्रन स्टडीड फ्रॉम होम, दे डिडंट अटेंड स्कूल, हाउ ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल ऑफ दैट हैज. थोड़ा सा स्टैट्स दे देंगे, बता देंगे लेवल ऑफ एजुकेशन, फिर बताएंगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए. सो ऑल ऑफ दिस शुड कम इन योर माइंड, isn't it? First 5 lines of the passage give away the central idea. If not always, but you should get an idea. पता होना चाहिए कि अब मैं आगे क्या पढ़ने वाला हूँ. So with this approach, when you attempt a lengthy passage, it helps. Like थोड़ी speed अपने आप बढ़ जाती है read करने की, because now your mind knows things. When you are confronted with something that is not familiar to you, you are going to take time. But when you are confronted with something you already know, then things get easier. Determine which category the passage belongs to. Is it some kind of a subjective knowledge? Does it concern the economy of the country? Does it concern like talking about or praising someone? एक सब्जेक्ट उठा लो, जैसे ही हम रीड करना स्टार्ट करते हैं, योर माइंड शुड जस्ट स्ट्राइक एट वंस कि ये है टॉपिक ऑफ डिस्कशन. ओके, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. व्हाट डू आई नो अबाउट इकोनॉमी? ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सो सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, कैटेगरी, विच कैटेगरी डज द पैसेज बिलोंग्स टू, एंड इमीडिएटली स्टॉप योर माइंड फ्रॉम थिंकिंग व्हाट द पैसेज इज नॉट. अगर पैसेज है एजुकेशन इन कोविड के बारे में, तो प्लीज आस्क योर माइंड नॉट टू टॉक अबाउट कि कितने केसेस हुए, केसेस क्यों बढ़े,
हाउ डिड द लॉकडाउन अफेक्ट द इकोनॉमी, ये सब चीजें हम माइनस कर देंगे. सो दिस इज हाउ योर लेंदी पैसेज अप्रोच will help you in your increasing the speed of whatever you read. All right, so these are a few pointers जिसमें हम lengthy passages को easily approach कर सकते हैं without panicking. Without seeing the length of the passage and without panicking, we can easily approach it. All right? Okay, moving. Okay. Next thing under tips and tricks to solve RC questions is the tone of the passage. First and foremost, I'd like to highlight, guys, is अगर आपको tones वाला question approach करना है, please keep your preparation up to the mark. टोन्स पे थरो होके जाना, टाइप्स ऑफ टोन्स पता होनी चाहिए. टोन बेसिकली क्या होती है? टोन इज की ऑथर तब क्या सोच रहे थे जब उन्होंने ये पैसेज लिखा, व्हाट वाज ही थिंकिंग, उनकी क्या अप्रोच रख के उन्होंने ये पैसेज अटेम्प्ट किया है. सो ये हो गई टोन ऑफ द ऑथर. क्या वो पॉजिटिव पॉजिटिवली बात कर रहे हैं, उनको सब कुछ अच्छा दिख रहा है, वो किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, या वो नेगेटिवली बात कर रहे हैं, चीजों में नुक्स निकाल रहे हैं, सिस्टम को कंप्लेन कर रहे हैं, ऑथर क्या बोल रहे हैं. सो ऑथर इज आवर गॉड एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड हिम. हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज गोइंग टू मेक यू क्लाइंब माउंटेन्स. सो ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज एवरीथिंग. Dear Clatopians, do not underestimate the tone, the point of view of the author. Okay, so लाइक आई सेड, फर्स्ट स्टेप वुड बी बिल्कुल थरो होके जाना है, अपनी प्रिपरेशन पे कोई उंगली ना उठाए, बस. दिस इज व्हाट यू शुड हैव इन माइंड, गाइस. सो टाइप्स ऑफ टोन्स पे थरो होके जाएंगे एंड देन वी विल जंप टू द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ऑथर ने क्या सोच के ये पैसेज लिख दिया है हमारे लिए. देन लुकिंग फॉर टर्म्स दैट आर डिस्क्रिप्टिव. इट्स अ पैसेज, ऑफ कोर्स यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स, बस देखने का एक नजरिया होना चाहिए. हर चीज का एक एग्जाम्पल होता है. कोई भी अगर सिचुएशन समझा दी है तो एक फीलिंग वाले टर्म से वो एक्सप्रेस कर देंगे. So these are all the adjectives, these are all the descriptive words that you need to look for in a passage that are going to help you, that are going to make things easier for you. What I always suggest is practice. ये चीजें overnight नहीं आएंगी, guys. Whatever I am telling you here is not going to come overnight. You take things from here, then you try to attempt the passages, and then you put this approach in those passages. तभी देखना how the magic works in just a few days. I am pretty sure of that. How magical things are going to happen if you do things diligently. Meticulous approach अगर रहेगी ना, nobody can shake you. These things are so, like, these are understandable things. These are not going to, like, याद करने की चीज नहीं बता रही हूं मैं. these are for practice, isn't it? So what you must do is कि अब जब हम एक आरसी करने बैठ रहे हैं, हम सबसे पहले तो एक टाइमर लगा देंगे. सबसे पहले हम एक पेन या मार्कर ले लेंगे हाथ में. उसके बाद जब हम रीड करते हैं, we'll make it a point to underline some things. फाइनल पॉइंटर्स में मेरा पहला पॉइंट यही है आप लोगों से, फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट डिटेल्स. स्पीड रीड जब हम करते हैं ना, तो we tend to skip things. Speed reading is not about skipping at all. Just keep this in mind. Speed reading is effective reading. Speed reading में हम smartly read करते हैं, तभी हमें वो औरों से अलग करता है. Because we are smart readers now. We read things effectively. हम read नहीं कर रहे हैं. We are effectively reading things now. Why? Because we know some tips now कि हम चीजें कैसे catch कर सकते हैं. Number one, person, places, subject, referred to and emotions expressed. जहां जहां हमें ये चीजें दिख जाती है ना, हम उसको एकदम पकड़ लेते हैं. This is why we are smart. हम read नहीं कर रहे हैं, we are just picking up things. If you find a name of a person, for example, एक editorial ले लिया किसी की crime story के बारे में, तो सबसे पहले मैंने वो subject पकड़ लिया. उसके बाद जो places highlight करी है, मैंने वो पकड़ ली. एक time period दिया होगा, मैंने वो catch कर लिया.
रेफर टू एन इमोशंस एक्सप्रेस्ड, कुछ इमोशंस एक्सप्रेस करे गए हैं क्या, जो दूसरे लोगों पर क्या इफेक्ट हुआ इसका, उस बारे में मैंने कैच कर लिया. सो आई एम एन इफेक्टिव रीडर नाउ. अल्टीमेटली जब मैंने पैसेज खत्म किया तो इन्फरेंस मेरे हाथ में था. Why? Because I am a smart reader. I read things in speed, but I don't skip things. I am an effective reader. So when you keep these things in mind, like I said, magic is going to happen. Understand each paragraph separately. पूरा पैसेज समझने में बहुत प्रॉब्लम जा सकती है कई बार, स्पेशली व्हेन इट इज लेंदी. सो हमें क्या करना है, डियर क्लैटोपियंस, हम पार्ट्स में करेंगे. वील डिवाइड एंड देन वील रूल. वील take paragraphs at a time instead of taking the entire passage all at once. We are going to take paragraphs separately. Okay? Pick small passages first. अब practice कर रहे हो तो ठीक है. You can start with small passages. ये जो strategies हैं that we just discussed, you can apply these to small paragraphs first. But don't forget to experiment. Experiment is the key. Experiment का टैटू बनवा लो. Experiment लाइफ में हमेशा होना चाहिए. अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, कंफर्टेबली कुछ नहीं करना है. पीपल हु कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, क्लैट ऐसा इसीलिए करता है. क्लैट आपकी स्पीड, एट द सेम टाइम इन्फरेंस, एट द सेम टाइम करेक्ट आंसर्स, एट द सेम टाइम पता नहीं क्या क्या जानने की कोशिश कर रहा है. सो जस्ट गो फॉर इट with an open mind, with a smart approach, and out of your comfort level. जो कंफर्ट लेवल में रह गए सो रह गए, जो बाहर निकल गए दे डू वंडर्स. ग्रामर, सी, यू मस्ट बी वंडरिंग अभी ग्रामर का क्या रोल है स्पीड रीडिंग में. क्या बात कर रहे हो. यस, ग्रामर गाइस. सी, एटलीस्ट बेसिक ग्रामर पता होनी चाहिए. बेसिक ग्रामर, व्हेन यू नो व्हाट इज अ नाउन, थोड़ा बहुत वर्ब्स, थोड़ा एडजेक्टिव, बेसिक ग्रामर पता होती है ना, तो रीडिंग बहुत इजी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट रीड कर रही हूं मैं. फोकस ऑन इंपॉर्टेंट डिटेल्स वाइल यू आर स्पीड रीडिंग. इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट टू. मुझे यहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक वर्ड्स का मतलब ऑलरेडी पता है. पर्सन क्या होता है, प्लेस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, मेरी वोकैब भी अच्छी चल रही है यहाँ पे. वाइल का मतलब मुझे पता है. वाइल, जब 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 तक यू आर स्पीड रीडिंग, इट इज इंपॉर्टेंट. मतलब रीड करते करते इंपॉर्टेंट होता है कि आप टेक्स्ट को समझते भी जाओ. तो अगर मुझे ये यूज ऑफ कंजंक्शन और ये सब नहीं पता होता तो फिर मैं कहाँ से इतनी स्पीडली रीड करती. सो दिस इज वाई वी स्ट्रेस एटलीस्ट बेसिक ग्रामर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. Vocabulary. Know the meanings of common words. See, this is an added advantage of reading. While you are reading, reading के साथ साथ आपकी स्पीड तो फास्ट होती है. You get a knack of understanding meanings of commonly used words at least. और नहीं आ रहे हैं, please underline it. Understand the meaning of tough words. पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स निकालो, उनके पैसेजेस सॉल्व करते जाओ. देन यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लैट एज वेल. Because not necessarily you will always get the editorials. You can also get excerpts. You can get excerpts from poems. तो जब poems से excerpts आते हैं ना, then speed reading, उसमें हमें स्पीड रीडिंग का नहीं, उसमें हमें अंडरस्टैंडिंग का भी करना पड़ता है. सो ग्रामर एंड वोकैब, एटलीस्ट बेसिक, वील ट्राई टू जस्ट प्रैक्टिस, बिकॉज दैट इज इंस्टेंटली गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू रीड. When you are aware of at least basic terms, what is a conjunction, what, how did this join, दो सेंटेंस हमने ज्वाइन कर लिए, वाइल क्यों यूज किया यहाँ पे. Like many a times we are unaware of things as basic as this one. Okay, so this was just an example, but I am pretty sure if you are going to strategize and introduce guided learning in your like daily approach, I'm sure results are going to come. Okay, well, this brings us to the end of this wonderful session, and I hope all of these pointers you are going to apply in like next time when you are attempting your comprehensions. Do practice. Like I said, please start with small passages first, and then you can move on to the lengthy ones. So that is all for today. This is me, Palak Rajani, who is going to say bye bye to you now, but with hope of you guys performing wonderfully each and every day, working hard, and don't forget to
like and share this video for more such amazing sessions. Okay, so that is all. I'll meet you once again next time with yet another wonderful video. Till then, keep practicing, stay focused, stay motivated, and stay logical with Vidhigya, your best pal in CLAT Preps.